हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो है स्टोरी एलिमेंट्स। जी हाँ, जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसमें उसको एक्सप्लेनेशन और उसकी स्टोरी सेटिंग जो है आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन स्कूल्स में भी स्टोरी सेट क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या स्टोरी सेटिंग है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफन कम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टोरी के लिए जो भी स्टोरी के अंदर वोकैबुलरी यूज हुई है उसे किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, किस तरीके से स्टोरी की जो सेटिंग होती है, इस वीडियो में आज हम वो सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी आप बच्चों को कोई भी स्टोरी पढ़ने के लिए दें, सबसे पहले आप एक प्रेडिक्शंस करें। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है मेकिंग प्रेडिक्शंस। मेकिंग प्रेडिक्शंस में मीन्स लाइक गेसिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, कि स्टोरी में आगे क्या होगा। टू मेक प्रेडिक्शन यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बिफोर रीडिंग आप जो भी पिक्चर है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को जो है पिक्चर वाली बुक्स दी जाती हैं, स्टोरी के साथ साथ पिक्चर्स होती हैं, इवन कवर पेज पे भी पिक्चर होती है। तो सबसे पहले बच्चे को टाइटल रीड करने के लिए दीजिए, देन उसको एक जो पिक्चर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए दीजिए कि उस पिक्चर में है क्या, इवन क्या चीज है। देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज ड्यूरिंग रीडिंग स्टॉप, गेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि बीच में ही थोड़ा सा रुक कर हाफ स्टोरी रीड करके जस्ट लुक एट द स्टोरी और थिंक अबाउट इट कि अब क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर रीडिंग सी योर प्रेडिक्शन वाज राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से आप स्टोरी कुकअप भी कर सकते हैं, स्टोरी कंप्लीटेशन भी इस तरीके से होता है। अब आता है स्टोरी एलिमेंट्स। स्टोरी एलिमेंट्स के 5 पॉइंट्स होते हैं जो आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं, इवन फिंगर्स पे भी। यहाँ पे स्टोरी एलिमेंट्स स्टोरी के साथ ही दिए गए हैं, जैसे कि STORY स्टोरी होता है, तो S मीन सेटिंग, वेयर इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस, स्टोरी कहाँ पर हो रही है, वेयर, इन द गार्डन, इन द पैलेस, और on the road, where it is going to be happen. T, talking characters, who is in the story, कौन कौन से characters हैं। तो T जो आता है हमारा talking characters के लिए आता है, कौन कौन स्टोरी में है, कौन से talking elements है। अगर हम lion and the mouse की बात करें तो वहां पे lion है, mouse है, तो इस तरीके से। Then O, a problem, क्या प्रॉब्लम है स्टोरी के अंदर, क्या जो है मेन पार्ट है क्या, तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम। आर, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, व्हाट डिड द कैरेक्टर डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे कि लायन इन द माउस में प्रॉब्लम क्या आई थी कि लायन ने माउस को पकड़ लिया था, और रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम उसने किस तरीके से रिजॉल्व करी थी, उसने उससे माफी मांगी थी, कहा था कि प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपको इन नियर फ्यूचर आपको हेल्प करूंगा, इसी तरीके से। और उसने वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी करी थी, इवन नियर फ्यूचर में जब लायन को प्रॉब्लम हुई थी तो उसने हेल्प भी करी थी। ये अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो उस स्टोरी का क्या सॉल्यूशन निकला। तो आप अपने फिंगर्स पे ये 5 एलिमेंट्स को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। S फॉर सेटिंग, T फॉर टॉकिंग कैरेक्टर, O प्रॉब्लम, R resolving the problem, Y ये a solution. Now let's read the story. Wind, fire and paper. So wind, fire and paper is here. Let's start the story. After reading this story, we will complete the story elements also. So this is a Chinese folk tale. A man old man lived in China with his 2 sons. His sons were married and to 2 sisters. They were living happily in their house. 2 sisters wanted to visit their parents. Before leaving, they took the blessings of the old man. They said, "We want to gift you something. What do you want?" "Get wind and fire wrapped in a paper," he said. The sisters promised and get his gift. They stayed for a few days with their parents. Now it is time for them to return, but they couldn't find the gift for the old man. They asked many people, but they couldn't help them. People said, "Wind will blow and
blow the paper and the fire will burn the paper. The two sisters started crying. Just then, a woman came to help them. She said, I can put wind and fire in a paper. First, she made a paper fan. Then, she made a paper box and put a lamp inside it. The old man was surprised to receive these gifts. So, this is the story. Now, let's see the vocabulary words. Blessings. Blessings means to give good wishes. Wrapped, to pack in a piece of paper. Promised, to give your words. Blow, to move something through the air. Burn, to catch fire. So now let's see the story elements. So you can see the story has 5 elements. Setting. Where is the story taking place? It was in China. There it is a house of an old man. T. Talking characters. Talking characters. There are an old man, his 2 sons, their 2 daughter-in-law, and 1 woman who helped them. Oh, what was the problem? The problem was that how to bring the wind and the fire in a paper. Resolving the problem, an old lady helped them to resolve the problem by making a paper fan, and then they made a paper bag and put a lamp inside it. So it was the solution. Yay, a solution. What was the solution? Solution was the thing. What did the character do? The character do उसमें आ जाएगा resolving the problem. They were crying and the woman asked them to help them. So what was the solution? They also get the solution also. I hope you liked the video, and this way you can give your child some stories and ask them to find the story elements. So keep watching my videos. In other videos, I also bring so many other stories, kid stories, in which I will show you the setting of the story elements as well. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and press the bell icon. And don't forget to comment in the comment box. Thank you so much.